UI. So, so the reason was that because I am from the computer background. I have done MCA, but I wasn't able to get any job because I was not interested in the programming field and all in networking field. Because from the beginning of my life, I was a very creative kind of a person. So when I came to know that there is a one field where we can actually create things using the computer graphics and all. So I heard about the institute Cut and Paste, and I have done this graphic designing course under the supervision of Mr. Irfan, and that was the beginning. Then for almost 1.5 years, I was working for that small advertising company. The name was of that advertising company was Color Karo. Then I got an opportunity in the IT company Almukit Systems, that is actually right now in Rangret. That's there. So I started my first job, you can say, as a UX UI, junior UX UI. So gradually for almost 5.5 years, I was working there. As you may be aware, in 2019, due to this revocation of this article, uh, uh, so I moved to the Bangalore and I got selected as a permanent UX UI in TCS. So right now I'm working with the TCS as a UX UI. By the way, Arif, we have one more. We have one Nausheen also. She's also working with TCS, Tata Consultancy. She's also Okay. here. She's also here. She's also from Okay. Bangladesh. Okay. Great. Great. Yeah. Great. Nausheen. Assalamualaikum. Yeah, welcome salam Nausheen. Yeah. या अभी Hi, इसका भी Arif. Welcome. या रिमोट जॉब Hi. ही चल रहा है ना आपका भी अभी Yeah. या So I can say like there are very good opportunities, ample opportunities in this graphic designing and UX UI thing in all over India. I think so. Even in our Kashmir, as I say, I was working almost 5.5 years in Kashmir only. I was taking at least minimum 45,000 of salary in Kashmir. So due to this pandemic and internet ban, that's why I moved to the Bangalore. That was the only reason I moved to the Bangalore, and right now I'm working with the in TCS in Bangalore. So that was my journey from till now. So I'm very glad if any question you have, you can ask me any question. yeah okay, you want to ask something or someone? See, this is what I don't like. People don't speak up. Yeah. Anyway, Nausheen, can you add something more? आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहो तो आप भी बोलो. आपकी भी सेम कंपनी है TCS. Arif, in which field are you working there in Bangalore? Like, I'm in the Life Science Interactive. I'm working that. Okay, so you are talking about the account, right? Yeah, right. Yeah. Actually, I'm working in a GE. Do you know GE? Oil and No, gas, that no. General Electrical. Yeah, जी जी. Okay. Yeah, I'm working with Got the it, got it. GA account. Yeah, actually, I'm creating one admin panel for Houston basis company B, Baker Hughes.com. Yeah, Okay. the Baker Hughes is a very big oil and gas company in Houston, Texas. So right now we are almost 20 people working together and creating the backend for that company. Right Are now, you working I'm with them? Are you working with them as a graphic designer or a UX no, no, designer? no, no, no. I'm totally working towards the UX UI part, the core Okay, UX UI. cool. Arif, I I'm remember also working with the same role. as soon you left Cut and Paste, I believe you had some opportunity from Japan. I don't know that if that was the project of Japan or what was that. If you can tell us something Yes, about yes, yes. Yeah, sure. It was my friend actually. He's a good developer. He was actually, we were together in MCA.
So he was very good friend of mine. He got selected in NEC. NEC is the very oldest electronic company in Japan. So he's working there. So he actually told me to they have one opportunity there in NEC, but due to some problem at my home, I wasn't able to join there. Mm-hmm. So otherwise, I will be there for almost 3 or 4 years now. Mm-hmm. No, anyway, I think Japan, you had to face lots of problem for the food there. Then you had to eat snakes, Yeah, cat, rats, and everything. yeah, exactly. Correct. Saeed is Yeah. also here. He's one of the best digital marketers in India. I don't know if he's here. If he can tell us something about digital marketing. Can you hear us? I can see him here, but his microphone is mute. Yeah, he's here. Assalamualaikum. Walaikum salam. Basically, digital marketing is just technological marketing. When you market on any digital device, it's called digital marketing. So this is a very big field, and it sub entails, graphic design, SEO, advertising, video marketing, and a plethora of other, similar marketing channels. So if you need some help from me as to what you should do in your career, or how should you get your first job, or how should you land your first client, I'm here to help you with that. Otherwise, no, I don't consider myself to be the best digital marketer of India. Neither am I. But if you want some help, because I am kind of senior to you, so I might do that. Yeah. Ask something. Ask some questions. See, I'm giving you the opportunities. Advantage. Actually, voice is not that much audible. There is some sound coming. But I can hear everyone clear. Anyway, if somebody has some question, Whenever somebody is not speaking, you can go on mute so that there's no background words or noise. yeah. So, Arif, what do you think? In short, what are the career opportunities in design? In design, not UX or graphic or something. In general, in this design field, there are of course there are them then different branches. There are so many branches then. See, Irfan, there are so many opportunities that one designer can actually explore. So, first thing, the designer should be capable of doing looking out of the box. So, there are so many opportunities. As I said, like everybody knows that we have started. I mean, I have started with a small company there in Kashmir as a graphic designer there. That was only, I think, 3 people were working there with me. We were creating these printing materials there. So that was my first job. So we can say that opportunity is there, but we have to look for opportunities. We cannot just sit and wait for the opportunity. We have to go and explore things, right? As if I told you how I started my journey, like as a UX UI, honestly speaking, in 2014 I got my first Yeah. phone with my own Okay. salary. Arif, 1 minute. See, there is a Basit. He Mhm. has to ask something. He has Okay. some question. Okay. Sure. Yeah, Basit, go ahead. He's in the chat box. Okay, he will type then. Till then, you carry on. Or Basit, whenever. So Yeah. Just ask question. If somebody has a question, just go on asking. Keep your microphone on and ask directly. Okay, okay, Arif, you continue. So I got really impressed with this Android system at that time. So I literally search for that. Who are these people? Those are creating these kind of like applications, these icons, whatever we can see on the Android phone right now. Right now, it's very uh, evolving now. But at that time, it was like it was the starting
phase. So that was my first day that when I search for those people who are creating these beautiful icons and all these things. So I came to know, so there is one field, UX UI. So that was my first day. Then I started looking for the job in that thing. And honestly speaking, I don't know what is UX UI. How can I become the UX UI? But I started searching job for that because I know I can do that. So I got a job as a UX UI in, because I was from the computer field, so I was very well aware about the web designing and all. So I start first creating the websites, designing these websites, then creating these websites and converting them itself into the HTML, CSS. That was my first when I started these things. Then gradually, I was continuously reading blogs these about these UX UI and all. What was my interest? So the main thing is you need to be interested for something. Like if you are a designer, you should be an interest of anything you want to create or you want to design, or any field you want in which you want to go. So this is the first thing you need to actually explore Yeah. in Okay. yourself, in your inside. Yeah, Wasim. Okay, Wasim. Just ask you a question. You don't have to type in the chat box. Ask. Yeah, Wasim has some question. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum, brother. Walaikum salam. Yeah. Walaikum salam. Brother, can I ask you one question? That is, how can you differentiate between the UI, UX, and normal graphics? Is there any difference you see in, as you have said that you have worked in ColorCoro and many other companies, and suddenly you changed your mind towards UI, UX. Can you explain us how different it was from changing from one place to another place? How can you differentiate between the two? Thank you. Yeah, sure. What's your name? What was your, sorry, I, hello? Wasim. Okay. Yeah, Wasim bhai. See, so first of all, I would like to say that I'm the product of the same cut and paste. Okay, so as I said, I have started working as a graphic designer first. So it was my interest. So as I said, I started then reading things and I explore for myself a new field. So see, if you are designer, so that means you can create things. First thing is that you can create or design things. So no matter what you have to design, whether it is a printing material or it's something that is what you call the web thing, the web material or something. So user experience and UI, I can say you the UI means the user interface, and user experience is something what user experiences when he exploring some product or some service from any media, whether it is a mobile, web. So if you're talking about how I differentiate these two things, the only difference is here, like web and what we say, the printing material. This is the only, I think, the difference between the two. So right now I'm designing for the web, for mobile, for internet. Before I was designing for just this printing materials like flyers, brochures, visiting cards and all, banners, signages we can say. Yeah. Something I think definitely you have to. कोई और भी था शायद जिसको कुछ पूछना था. I think somebody is there. He tried to ask something. Actually, let's do one thing. यहाँ पे कुछ है, they are not able to speak or understand in English. कोई बात नहीं. Let's कश्मीरी use में, उर्दू Urdu, में, so okay. आप पूछो. Urdu or Kashmiri. That will be better. जो So that they can also, मेन चीज जो है say बात को something. समझना. Okay, no problem.
हाँ Sorry to interrupt you, Arif, but it No was problem. Sorry. नो इट्स ओके। सईद के लिए कोई पूछ रहा था, कुछ क्वेश्चन है आई थिंक। या Sir, हाँ can I ask a question to Sister Naushin? अरे यू कैन आस्क, जस्ट आस्क क्वेश्चन। टाइम वेस्ट हो रहा है, कैन आई आस्क में 3-4 सेकंड वेस्ट हो रहे हैं। अब पूछो ओके भाई, सिंपल तो आप सवाल लाइन में आ डायरेक्ट। जाओ, आप अपनी माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो और माइक ऑफ कर दो। जिसके लिए हाँ डायरेक्टेड होगा जी क्वेश्चन प्लीज, वो मैं फिर भी आंसर करे। बैठा हूँ क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपरली। Okay. So my question to Sister Naushin is that last time you told about the how can we make our profile, like what should we write in our profile for the if we are preparing to go for interview and show our capabilities and skills. got it, got it. Last at the last the time was up and we didn't listen your Yeah, suggestions at that time. exactly. No issue. I will tell. अभी तो आरिफ भाई, अभी तो मेरे से ज्यादा experience थी, will give much better suggestion than me. Okay. But कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। Actually क्या होता है, इंटरव्यू में पहली बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत लैक करता है हर किसी को। कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें, ऐसे क्वेश्चन, कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस नहीं आते हमें, तो तब ना चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर गलत भी हो ना तो जवाब देना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसको आता है कितना और क्या आता है, ये देखते कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उसमें। पहली बात, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, चाहे वो गलत भी बोलो या सही भी हो, दोनों चीज। दूसरा, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें हर कोई चीज आपको, मतलब जो भी आप बनाओ, जैसे कि लोगोज है, फ्लायर्स है, टेम्पलेट्स, कुछ भी हो, पीपीटीज हो, जो भी हो, वो बनाओ, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज वो अच्छा होना चाहिए। उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपने कलर्स क्यों यूज किए, कौन से किए हैं, वो उस कलर के मतलब उस कलर के साथ वो कंटेंट, मतलब पूरा वो फ्लायर जा रहा है, वो सब देखना चाहिए। वैसे आपका जो अपना पोर्टफोलियो है ना, वो स्ट्रांग बनाना चाहिए, और वो ना अट्रैक्टिव, बहुत अपीलिंग होना चाहिए कि देख के अच्छा लगे। फिर उसमें अगर उस पोर्टफोलियो में अगर आपको कोई, मतलब कोई बताएगा कि आपने बनाया क्या है, देयर आप स्टक नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो ये मैंने बनाया है, ये क्यों मैंने बनाया है। हाँ, तो ये हो गया। फिर आपको बोलेंगे कलर क्यों चूज किया, आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे भी एवे भी कलर यूज करोगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि मैंने अगर ये एवे ही, आपको वहां नहीं बता बोलना है मैंने ऐसे एवे यूज किया, यू हैव टू, मतलब आपको बोलना है मैंने ये कलर क्यों यूज किया। ये क्वेश्चन ये मेरे साथ हो गया था इंटरव्यू में। मैंने सैफरॉन पे बनाया था एक क्लाइंट, तो क्या हुआ, मैंने पर्पल किया था, ग्रीन किया था, रेड किया था, तो सैफरॉन का एक्चुअल कलर क्या है, इट्स क्रिम्सन रेड टाइप कलर। तो मैंने क्या किया था, मैंने बनाया था, और मेरा लोगो वो येलोइश कुछ कलर था, तो मैंने ऐसे ही बनाया था, क्योंकि मैं स्टार्टअप में वो बनाया था, ज्यादा उतना पता नहीं थी मेरे को। तो फिर जब मैंने पूछा, मैं वहां पे स्टक होने वाली थी, तो मैंने क्या, उधर मैंने क्या किया, आई सेड कि आई यूज द नेचुरल कलर्स फ्रॉम द नेचर, सो दैट्स व्हाई आई यूज दीज कलर्स। तो मतलब ये चीजें अगर आप रखोगे ना, और आपका रिज्यूमे शुड बी सिंपल, नॉट दैट मच। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम रिज्यूमे बहुत अजीब से बनाते हैं, मतलब बहुत स्टाइलिश बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिज्यूमे प्रॉपर और सिंपल होना चाहिए। ये गलती मैंने भी की थी, मैंने रिज्यूमे जो है वो बहुत स्टाइलिश बनाया, तो मुझे सीधे उन्होंने बोला रिज्यूमे आपके बहुत वाहियात हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड और प्रॉपरली होना चाहिए। सबसे मेन चीज है सिर्फ आपकी और आपका कॉन्फिडेंस। और एक चीज, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ, मतलब बहुत हाई पे इन फ्यूचर, देन प्लीज अगर कोई फ्रेशर है यहाँ पे, उनको प्लीज पहले सैलरी मत देखो, सैलरी से पहले अपना ये देखो कि मेरी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, मतलब फ्यूचर सी के एक्सपीरियंस मेरी बढ़नी चाहिए, ना कि सैलरी। क्योंकि जब आपकी सैलरी, मतलब एक्सपीरियंस अच्छी होगी आगे, मतलब पहले, तो आपका जो फ्यूचर है ना, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। ये हम गलती करते हैं, हम पहले सैलरी देखते, अरे यहाँ पे 7,000 है, मुझे क्या हो जाएगा, ये नहीं देखते कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी पहले। ये चीजें मतलब रखनी चाहिए जब आप
कहीं पे इंटरव्यू लो या कुछ भी हो, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। और आप कह रहे हो कि मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और कुछ नहीं है, दैट्स इट। एक तब अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्लीज़। मैं एक जनरल एडवाइस देता हूँ। आई बीन अ रिक्रूटर एज वेल, मतलब मैं टू डायरेक्ट, मैं हेड ऑफ मार्केटिंग था जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी का। तो आई यूज्ड टू हायर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, डिजाइनर्स, राइटर्स, मार्केटर्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सब कुछ। तो जनरली एक चीज है, जैसे कश्मीर के लोग हैं ना, मतलब हम पीछे हैं दुनिया से जनरली, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसी कंपनीज नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे हम मतलब अपना जो टैलेंट है, ये जो या जो अपना पोटेंशियल है उसको सीख कर सकते हैं। तो जनरली हम एक डिसएडवांटेज में होते हैं कि हम थोड़ा पीछे हैं दुनिया से, मतलब जो बड़े शहरों के बच्चे हैं ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो उसको टैकल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियो देखो, कंटेंट देखो, या अपने मेंटोर से बात करो। जैसे इरफान सर है आपके पास, तो इनके पास एक्सपीरियंस है काफी जगहों पे रहने की, काफी लोगों से मिलने की, काफी कंपनीज में काम करने की, इनके क्लाइंट्स भी रहते हैं। तो इनके पास इंसाइट्स होते हैं, इंडस्ट्री इंसाइट्स होते हैं, उन पे ध्यान दो। जनरली कीप एवरीथिंग सिंपल बट बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब करते रहो सेम चीज, मतलब इवन इफ इट्स मतलब आपको फटीग लगे, आप थको, लेकिन सेम चीज, सिंपल चीजों को ना बार बार करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना डिजाइन इंप्रूव करना है, आप उस पर लगे रहो। इसी तरह आपको अपना रेज्यूमे बेटर करना है, उसको थोड़ा 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 बेहतर करते रहो। हर महीने देखो कि आपका रेज्यूमे कितना बेटर हो गया। आपकी अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसको बनाओ और उसको इम्प्रूव करते रहो। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दिन में बादशाह बन जाता है या कोई एक दिन में परफेक्ट बन जाता है, लेकिन परफेक्शन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आती है। तो वो लगातार लिया करो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, बात करो, फॉर एग्जांपल डिस्कशन करो, एजुकेटेड डिस्कशन करो, मतलब ऐसे जिसमें ना आपकी इंटेलिजेंस और आपकी एजुकेशन टेस्ट हो। ऐसे डिस्कशन नहीं जिसमें रैंडमली कुछ भी नॉन फैक्चुअल बात करनी है। तो उन चीजों पे ध्यान दो और फोकस से इस पे काम करो। तो तो आप ना उस लेवल पे आ जाओगे कि आप कर पाओगे। तो हमारे पास, क्योंकि कुछ बच्चे जो कर्टन पे से निकले, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट और जो वो लैंडस्केप है ना ग्राफिक डिजाइन का, उनकी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ना पहले ही ऐसे जॉब्स निकाले जिनमें फर्स्ट जॉब्स जिनमें 1-1.5 लाख की सैलरी उनको मिली। लेकिन तब जब उन्होंने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च करी थी, उन्होंने अपने को उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो वो चीजों पे ध्यान दो, मतलब एजुकेशनल मटेरियल, ब्लॉग्स हो या वीडियोस हो या जो भी है, उसको ना ज्यादा कंज्यूम करो और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हर चीज को इम्प्रूव करने के लिए लेते रहो, लैंग्वेज, डिजाइन स्किल या बाकी जो भी है आपका। जी, किसी और को कुछ पूछना? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ फिरोज। लगभग 4 साल बाद आज मैंने फिर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की है फ्रॉम स्क्रैच। अभी थोड़ा-सा शौक बढ़ रहा है इसमें, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप एक्सपर्ट से कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइन में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं अभी भी कर रहा हूँ, छोटा-मोटा कारोबार ही कर रहा हूँ। तो अभी सोच रहा था इसके मुतल्लिक, तो आप बता सकते हैं कि इसमें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? अगर आगे चल के इसमें कुछ किया, अगर हम जॉब नहीं करना चाहते किसी कंपनी में। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद? देखिए आई यावर, थिंक अभी जो भी चीज आप दुनिया में देखोगे ना, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। और जितना आप डिजिटल चीजों पे काम करोगे, उतना आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर या कुछ भी। ठीक है ना? लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मतलब को एक्सप्लोर करने से पहले ना आपको अपनी
स्किल्स डेवलप करनी है जिसको हम ना मिस कर जाते हैं। तो स्किल डेवलप करने के लिए आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ेंगे, आपको सीखना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप कट एंड पेस्ट जाएंगे, 2 घंटे बैठेंगे सर के साथ और आपको लगेगा कि आपने सीख लिया। नहीं, वो आपको टूल्स देंगे, कीज देंगे, वो टिडबिट्स देंगे, जो फॉर एग्जांपल कलर्स कैसे लगाने हैं। लेकिन जो एक्चुअल रिसर्च और एक्चुअल उसको ना अप्लाई करना, आपके आपको खुद करना है घर पे। मतलब आपको 6 7 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक जॉब भी लेना है, उसको समझना है कि क्लाइंट बात कैसे करता है, फीडबैक कैसे लेना होता है, क्लाइंट ब्रीफ कैसे लेना होता है, क्रिएटिव ब्रीफ कैसे लेना होता है। तो सब चीजों को समझना है। जब तक आप वो पूरा प्रोसेस नहीं समझोगे, इसमें अपॉर्चुनिटी मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन यस, एक बार आपने ये सारा प्रोसेस समझा और पूरे फ्लो को समझा, उसके बाद इसमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। मतलब देयर इज नो बार टू अपॉर्चुनिटी इसके बाद। राइट, एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज एक कि कुछ चीज पाने के लिए किसी चीज की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे उसमें? आई विल टेल यू माइन। जब मेरा यूआई यूएक्स था, मेरा फर्स्ट टाइम था टीसीएस में, कुछ नहीं आता था बिकॉज इट वाज टोटली डिफरेंट जो मैंने एमिटी से करा था। इट वाज टोटली डिफरेंट। मेरे को आई वाज लाइक टोटली ब्लैंक कि ये क्या है। तो जब मैं वहां गई, मैंने यूआई यूएक्स देखा, मैंने वो बनाया, फिर मेरे को समझ आया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अभी मैं आप ही का सोचता है, आई डोंट नो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं चाहूँ तो मैं आज अगर टीसीएस छोड़ दूंगी, मैं अपना जॉब करूंगी। मुझे वो एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कर चुकी हूँ। मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है, जाना है, परखा, क्लाइंट से बात करी है, जो यूएस के क्लाइंट्स होते हैं उनसे बात करी है, सब कुछ पता है। तो मैं अपना बिजनेस अब इन फ्यूचर ओपन कर सकती हूँ। तो एक्सपीरियंस होना इज वेरी मस्ट। तो आई थिंक इन्होंने बहुत सही बोला। थैंक यू। Assalamu alaikum. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, I joined in a little late, so I don't know if anyone has asked this question or not. But I have a few questions. So I'll start with first one. I actually recently finished my course from Cut and Paste, and Sorry after that, to interrupt. Can you please tell your name first, your good name? yeah, my name is Basit. Sure, thank you. Yeah, can I go ahead now? Yeah, sure. So yeah, I recently finished my course from Cut and Paste, and after that I've been quite lost. Irfan sir did guide me about how to start and go ahead with my career, but I've been facing some problems that I would like you to clarify. For example, the first thing that I wanted to do, or that sir suggested, was 99design.com and join the competitions. So what I found that in order to only register for the website, I'm facing quite a lot of issues. For example, they have made the process really difficult from last few years. Like, I need a portfolio, and since I am a newbie, I haven't worked in the field, I don't have a portfolio. Whatever I have created is not from clients, it's my own. I have been creating things from my imagination. So it is not going to work for long. Like, I can't keep making things from my imagination or just demo these designs. So as a beginner, how do you showcase, or what do you showcase in your portfolio? Number one. And number two, should I go for a traditional job? And as a newbie who has just finished a course, would companies accept me without any experience, or without any realistic portfolio to show? Basit, you can try out advertising agencies, UI agencies, and similar, kind of businesses. There are people who are doing jobs, without any experience, and I used to hire many without any experience. That doesn't make a difference to the hiring manager.
because all they want is skill, and if you showcase your skill in any format or in any way, you can demonstrate your skill, it works perfectly fine for the hiring manager. This is because one design में आपको experience, तो you require experience, but it's not like मतलब very essential in terms ki agar aapko, if you know the tools and if you have your basics clear, like you have the typography clear, you have the design aesthetics clear, and color coding and stuff, so it works. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. So you can start with looking for work from home jobs if you don't want to move out of Kashmir. One, two, you can set up a profile on Upwork, Freelancer, Fiverr, and try any gig. Give it for $5. No, doesn't matter. Try to get a gig और उसको अपने पोर्टफोलियो पे डालो, एंड उससे इम्प्रूव करो. एंड देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू यू कैन वाइट लेबल योर सर्विसेज. फॉर एग्जांपल उधर लोग होंगे who are who have clients, बड़े बड़े डिजाइन एजेंसीज होंगी या छोटी एजेंसी होगी या डिजाइन कंसल्टेंट्स होंगे जिनके पास खुद के पास काम है, एंड दे वांट टू सबलेट इट टू समबडी एल्स, सब कॉन्ट्रैक्ट. तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो. जस्ट गूगल इट, मतलब किसी भी एजेंसी को ना ईमेल डालो कि आई एम विलिंग टू टेक सम ऑफ योर वर्क, इफ यू आर विलिंग टू पे मी एनी बेसिक वेज. ठीक है ना. उससे अपना पोर्टफोलियो बनाओ और फिर wherever you want to showcase it, you can showcase it. Look, this is the very, this is the easiest way to go ahead if you don't want to move out of your place. If you want to move out of, if you're fine with moving out, apply for jobs here and there, wherever you get it, go and join. We are left with 5 minutes now, so if you have some short questions which you can finish in 5 minutes, so go ahead with that. कुछ पूछना है और किसी को? Yes sir, मुझे पूछना So था. also, So मुझे ये पूछना था कि most of the students, like we are learning like graphic design, we are lost at the end. We are lost because we didn't know where to go and where we find the jobs that can suit us as per our experiences and as per our skills. But So Wasim, you didn't finish yet. How are you lost? You you're still on the journey. no Generally इसमें मैं एक as जवाब no दूंगा. I'm telling If about you're lost, if you're lost, the brother said that at the end most of the students are lost because they don't have the way where to go at the end. That's why I'm देखो, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स लिया और उसके बैकग्राउंड चेक करते रहे और अपना लैंडस्केप एक्सप्लोर करते रहे, then you would not be lost. There are agencies hiring for such people. There are products, tech companies hiring for product designers. There are consultants hiring, consulting agencies. जैसे ये दोनों PCS में काम करते हैं. These are consulting firms. So they hire. So the design हर जगह चाहिए होता है. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी चाहिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी चाहिए, वेब डिजाइन एजेंसी में भी चाहिए, वेब डेवलपमेंट एजेंसी में भी चाहिए, हर जगह डिजाइन सब चाहिए. जगह तो सब इट इज जगह जस्ट so you just have to go out and apply for jobs. It is no excuse. It is मतलब if you say that I after doing the think course you don't know where to go, इसका मतलब है कि you have not paid full attention in the course. full attention. आई थिंक इसका ये मतलब है कि अगर कहीं पर भी इंटरव्यू क्रैक नहीं है तो उसके बाद हम क्या करें. आई थिंक सो दैट व्हाट ही मेंट. exactly. मतलब what नहीं, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे क्रैक नहीं होगा. ऐसा कुछ मतलब नहीं अगर है. एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए क्रैक नहीं हुआ, छोटी के लिए होगा. अगर छोटी के लिए भी नहीं हो छोटे रहा है, दूसरी जगह छोटी के लिए होगा, क्योंकि इतने जॉब्स है मार्केट में कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. इसके लिए डोंट ना लूज सेल्फ होप. बिलीफ भी चाहिए कि मैं ना कहीं पे कर दूंगा. नहीं हो रहा है तो मैं करूंगा. फॉर एग्जाम्पल आप पहला इंटरव्यू देंगे, आपसे नहीं होगा, तो आप उसमें सीखोगे कि मैंने कैसे बात करी, मैंने कौन सी बात गलत करी. then how should I improve my interview, मतलब how should I be better at the next one. तो वो चीजें आपको करना है. एंड मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इतना जितना आप इसके बारे में पैनिक हो रहे हो उतना है नहीं डिफिकल्ट. इट्स वेरी सिंपल, आपका हो जाएगा.
डरना नहीं है वसीम, इंटरव्यू देते जाओ, उतना आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह यू विल गेट। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो चिल करो अच्छे से। इंटरव्यू एक बार खराब हो गया, दूसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी ना, छोटी या बड़ी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। बस होप रखो और स्ट्रांग रहो और मेहनत करते जाओ, दैट्स इट। हर दिन एक डिज़ाइन बनाते बनाते रहो, ये फॉर ट्रिक है। हाँ, डिजाइन करते रहो, जितना आप लोग डिजाइन करोगे उतना ही उतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी डिजाइन में। अगर एक मतलब आर्टिस्ट एज मैंने पेंटिंग भी करी है, एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड की थी, फिर आर्ट्स ले लिया। तो पेंटिंग करा मैंने, अभी तो पेंटिंग का मतलब पूरा हाथ छोड़ गया है। वही बात है, जितना आप डिजाइन, जैसे मेरा पेंटिंग में हाथ छोड़ गया ना, मैं अभी पूरा प्रॉपर एक लाइन नहीं बनाती क्योंकि मेरा हाथ छोड़ गया। वैसे डिजाइन है, डिजाइन जितना करोगे ना उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट डिजाइन में आ जाएगी। पहले मैं क्या करती थी, मैं डिजाइन में सिर्फ कार्ड्स बनाती थी, आज मैं इतने अच्छे अच्छे फ्लायर्स बनाती हूँ ना। क्यों क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना वो डेवलप हो रहा है कि और क्या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप एक ही जगह रहोगे, डिजाइन नहीं करोगे कुछ, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, बस वहीं पे स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो अपनी डिजाइन्स भी इम्प्रूव करो। वो थोड़ा ना लोगोस भी देखो, वहां पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि लोगों में क्या करते हैं लोग, वो पहले लोगों के बारे में पढ़ते नहीं कि लोगो होता क्या है, बस बनाते जाते हो गया खत्म, दे दो क्लाइंट को। ये नहीं देखते कि कौन सी लोगो कहाँ पे लगती है, एनीवे, किस टाइप का लोगो कहाँ नौशीन, पे लगना चाहिए। थैंक यू वेरी That's it. मच। अब 25 सेकंड्स बचे। आई थैंक यू सईद, आरिफ, नौशीन, जो सब लोग यहाँ पे हैं। वीड लव टू हैव मोर एंड मोर सेशंस लाइक दिस, अगर आपको पसंद है तो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विद आपका भी दैट बहुत शुक्रिया फिनिश। इतनी Thanks, यूजफुल Irfan. इंफॉर्मेशन देने के लिए। चलो, थैंक यू, Thank you खुदा so हाफिज़। much. Thank you so much. Irfan. Thank you everyone. Thank you Saeed and Arif as well. Thank you so much. Thank you Thank you, everyone. sir. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Yeah.